Hello everyone. Hi everyone. How is the CET prep going? Can post us any doubt. Hello Satak. Hello Tejas. Hi. 12 people have joined already. That's Perfect. nice. Hello. A lot of our students have also joined. It's great to see them here. Let's do a quick pulse check, guys. Can you all post where you are preparing from? Which city? We are 23 students now watching. Quickly, if you can just put in the chat where you are preparing from. Okay, we've Okay. already got a lot of questions. Yeah. So I think there are two of us Yeah. now, so we can pick up a lot of questions Yes, and someone answer. finally answered my question, which is where are you guys from? Tejas is from Chandrapur. That's good. 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 Uh, One of our batchmates, multiple of our batchmates also from Chandrapur, but Yeah. one very close friend, Anjesh, was from Chandrapur. Okay. Let's start with the question. I think Yes. फर्स्ट इज किशन सेइंग स्कोर नहीं आ रहा है छोड़ देने का मन कर रहा है मॉक स्कोर देखते ही डिमोटिवेट हो जा रहा हो ओके it's like the story of every student but very good that you asked this question and I think हर स्टूडेंट का पहले कुछ मॉक देने के बाद में यही स्टोरी होता है but before I answer this question आई जनरली से स्टूडेंट्स कि आप पहले के जो 3 मॉक्स है या पहले के 5 मॉक्स है उसके स्कोर को आप ध्यान में रखो ही मत डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू द फर्स्ट 3 मॉक्स दैट यू गिव एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस व्हाई फर्स्ट 3 मॉक्स में हमको 2.5 आवर्स बैठने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है खुद को बिकॉज पहला मॉक 101% आपका अल्टीमेट परफॉर्मेंस या पीक परफॉर्मेंस नहीं होने वाला तो फर्स्ट 3 मॉक्स इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड सीईटी का पेपर क्या है उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कौन से पैटर्न्स के क्वेश्चंस है कौन से सेक्शंस के एटसेट्रा I think Shrikant is facing internet issues. He'll be back in a minute. But guys, the main thing about mocks is that score does not matter, especially at this stage. अभी बहुत टाइम है सीईटी के लिए और there is a lot of time to improve. You would just see mock scores as a stepping stone and as a learning opportunity. Every mock से तुम्हें बस सीखना है. Score of the mock does not really matter because no college, JBIMS system, they don't accept mock scores, right? तो उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी. You just have to learn from mocks. Just ensure कि तुम्हें आज जितना भी स्कोर आ रहा है, be it 20, 30, 40 marks in a mock,
the next mock you should have improved your score. Just focus on that. And अगर तुम अभी zero से भी start कर रहे हो, if you make those small improvements, there are 3 months to go for CET, so you can improve a lot. You don't have to worry, and बिल्कुल भी demotivate नहीं होना है, because mock score से कुछ फर्क नहीं पड़ता है. You just have to learn from them. So just ensure that you're learning from each and every mock. या आई थिंक मेरा नेटवर्क चला गया था बट आई एम बैक. So yeah, I think whatever Aditya mentioned, true. Don't get demotivated, but at the same time, एक नंबर दिमाग में रखना जरूरी है. पहले 3 से 5 मॉक पे आप फुल फोकस करके पेपर पैटर्न समझना सीखो. उसके बाद में आप खुद को जज करो, या उसके बाद में आप डिमोटिवेट होना है या नहीं होना है वो जज कर सकते हो. Okay, you can take the next question, Aditya. Yeah, before that, just one request, guys. If you could like the stream, that'll be really helpful for us, and it really motivates us also. Otherwise, we will also get demotivated by the less number of likes on this video. So please like. Let's go on to the next question. Study material or books to refer for CET. So if Omkar, you've joined any classes, so any classes का material, be it TTB, any other classes, उनका material is enough for cracking CET. So just refer that. If you are preparing on your own, then you can go for any book for verbal, logic, quant, R.S. Agrawal is a common book, so you can just go for that. But any book that you get, any coaching class, um, will just work. Yeah. So I think study material and books to refer for CET में my there are one or two points that I'd like to add is that कि आपको प्रैक्टिस मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए rather than study material. Study material is for content and is for understanding the syllabus etc. बट सीईटी का सेंस एग्जामिनेशन काफ़ी इजी होता है. ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस मटेरियल पे होना चाहिए कि आपको प्रैक्टिस मटेरियल कहाँ से मिल रहा है. ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट जहाँ भी आपको मिल रहा है, आई थिंक शुड गो फॉर दैट. We particularly have the top percentile course on our website. उसमें almost 200 practice tests, 40 sectional tests, 46 mocks, etc. है. I think if you are, looking for a good coach, you can obviously join us. जस्ट इन अभी सिंह सर, अभी प्रिपरेशन yeah, स्टार्ट कर सकता हूँ क्या वीक को मैथ्स में? जस्ट इन यस, अभी if you start, then there is enough time to crack CET, top CET, get into JBIMS. Week into math, week अगर हो मैथ्स में, there is a lot of time to learn and improve maths. Also you have to remember कि maths सीईटी में वेटेज बहुत ही कम है, तो QA DI is around 25% of the paper. उसमें quant is about 30 questions. So quant का weightage is compared, like comparatively to other exams, is less in CET. So you don't have to worry. And जितना points required है for CET, it is very easily doable. It's learnable, because CET का level is lesser also compared to CAT and other exams. yeah. Okay, so I'll take the other questions. Karthik is saying, hey guys, syllogisms easier with Venn diagram method or coding method? I think it's much easier with the Venn diagram method, but you just have to make sure that you make all the cases. केसेस जितने आप बनाओगे, 1 केस 2 केस, उसके हिसाब से आप कंक्लूजन में इजी फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है. ठीक है. विच मॉक्स आर बेटर, विवेक इज आस्किंग. ठीक है, आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन अ लॉट ऑफ टाइम्स. आप कोई भी मॉक दे सकते हो, इट्स बेटर. इट्स इट्स गोइंग टू बी गुड. हर मॉक जो भी अवेलेबल है आउटसाइड, every mock is good because the 6 of us from the top percentile, the co-founders, हर किसी ने अलग अलग मॉक दिया है. पर्टिकुलरली मैंने टेस्ट फंडा दिया था,
IMS टाइम, सीटी किंग, सब मॉक्स जितने भी है हमने, और हर किसी ने अलग अलग दिए थे। इनफैक्ट हम लोग के को फाउंडर हर्ष ने भी एंडीवर का मॉक दिया था सिर्फ, आदित्य ने भी टेस्ट फंडा का मॉक दिया था। तो हर मॉक अच्छा होता है, ऐसा सच कोई बेटर कोई भी नहीं है, आई वुड से। ओके। Okay, Abhinav is saying scoring 125 to 113 test funda mocks. Verbal is weak area. How to improve verbal section? Aditya, would you like to take this or should I take Yeah, this? sure. I can take this. Firstly, Abhinav, very good job. It's a very good score at this stage. So keep doing whatever you're doing. Keep the practice going. Secondly, verbal, agar weak hai, now you know that verbal as a whole, if you're saying weak, now you have to dive deeper into the issue. Verbal में exactly कहाँ you are facing issues, right? Some things like one is RC, grammar rules, synonyms, antonyms, where exactly you are facing the issue in verbal. Next, you have to go through that, depending on the analysis of your last 5 marks. ठीक है? उसके बाद, wherever there is an issue, the simple answer is that you have to practice that a lot of times. अगर RC में issue आ रहा है, just go back to the concept builders or the study material, wherever you're preparing from, and then solve 100 RCs, 5 RCs a day, 10 RCs a day, um, and then do that for every topic you're facing a challenge in for verbal. It's as simple as that. And if as a whole अभी तुम्हें समझ नहीं आया कि वर्बल में एग्जैक्टली कहाँ चैलेंज आ रहा है, तो यू कैन जस्ट गिव वर्बल सेक्शनल टेस्ट 2 to 3, so that you're just focusing on verbal, and then again try to figure out which topics may you are weak. And if you're not a student, I would encourage you to join, because Srikanth here was very, very weak in verbal. He has improved that. So you'll get a lot of insights from mentors like Srikanth in our course. I specifically, मेरा verbal relatively strong था, so I has to score 40 plus out of 50. And like that's why the tricks and tips that I used to use to solve RCs, to solve grammar rules, uh, is what we teach in our course. Yeah. Okay, Arjun Prabhu is asking how much is the best score for logical reasoning in CET? How much time to take according to last year pattern? Okay, so Arjun, I basically divide the 150 minutes in the CET paper into 150 marks as an ideal target. But obviously, score should be sometimes if the slot is very very easier, score ज़्यादा भी हो सकता है. बट आप जनरली ऐसे कर सकते हो लॉजिकल में, सिंस 75 क्वेश्चंस है, मैं एक आपको एक रैंडम एक स्ट्रक्चर्ड नंबर बताता हूँ जो आप याद कर सकते हो. फॉर LR यू कैन गिव एनीवेयर अराउंड 60 minutes, +or -5 डिपेंडिंग की सेक्शन इजी है या डिफिकल्ट है, यू हैव टू अडाप्ट इमीडिएटली. बट 60 फॉर लॉजिकल रीजनिंग, 20 minutes फॉर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, दैट इज योर 80 minutes. उसके बाद में 30 to 35 minutes, 35 minutes for your verbal and 35 minutes for your quants. बट इसमें आप +or -5 minutes पकड़ के चल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी. अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो ऑब्वियसली आपको टाइम थोड़ा रिड्यूस करना है, एंड जो इजी क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा वर्कआउट करना है. एंड जो रिमेनिंग टाइम बचेगा लास्ट में उसको आप मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस को आके फिगर आउट कर सकते हो. तो जस्ट टू रिपीट, logical reasoning around 60 minutes is a good number, and your target score should be 60 marks. Same for abstract reasoning, 20 minutes is a good number, target score should be 20 +or -5. Same for verbal and quants, it is 35 minutes, 30 to 35 minutes +or -5 depending upon the level of difficulty, and score again is 30 to 35 is the target. And this way you will reach 150 minutes में 150 score, and +or -5 के हिसाब से अगर easy है paper तो you can go to 160, 175 as well. Difficult paper, so it can come down to 125 as well. That should be the ideal, breakup of the sectional timings. As you have to be strong in all of the section, right? कोई एक section पे आप depend करके 99 पर 99 नेम नहीं कर सकते.
तो The ओके next तन्मय. question is from Tanvay. Just started with CT prep. So DLR is completely different from CAT. Yes, CAT ka DLR is very challenging. They try to give unique sets every year. CT में ऐसा नहीं है. CT में it's very very predictable the types of questions that come. So Tanmay, if you have already taken the CAT and your basics are already clear, uh, I would advise you to not go through the syllabus as such. Just take a mock of a CET paper and then figure out the weak topics. So in DLR, where exactly you are facing an issue, I'm like my assumption is that in DI you would not face an issue because you would have prepared that in CAT, and in DI there won't be anything different. But for LR, obviously, it might be different. So just see what you're already good at, what you're comfortable at, and what you're not comfortable at. Go through the uh, questions and practice those questions, and then just take another mock. Don't go through the syllabus as such. तो ओके. I can take the next question from Omkar. I am from Maharashtra. Should I take CET or CMAT to get into JBIMS? So, Omkar, I tell all the students who ask me just to take both the exams just because there is no harm in taking both the exams. Through CET, obviously, you can apply to the Maharashtra quota. You need in the open category about 99.93 percentile approximately to get in. In CMAT, you will have to apply to the All India quota, but if you get a 99.99 percentile, uh, then you can get in through the All India quota. So there is nothing to lose in CMAT, right? If you take the exam, you get the score, then good. You've already secured admission to JBIMS. But if you've not scored, then you have another exam to take, which is CET. Secondly, just taking the CMAT, like in actual test conditions, तुम्हें वो सेंटर पे जाना होगा, तुम्हारा एक वेरिफिकेशन होगा, तुम्हें स्टूडेंट्स के अराउंड वो एग्जाम देना होगा. तो इफ यू आर अ फ्रेशर और इफ यू हैव नॉट टेकन अ लॉट ऑफ एमबीए एंट्रेंस एग्जाम बिफोर, दैट बिकम्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ कैसा होता है टेस्ट डी डे पे, हाउ इज इट लाइक टेकिंग अ टेस्ट. तो उसका भी बहुत अच्छा तुम्हें प्रैक्टिस हो जाता है एंड यू आर very very comfortable with that situation, surroundings and environment. या Sathak is saying scoring around 80 up and potential marks around 20, which is good for starters, around 80. But I think by the end of December, you should try to target to reach close to 100. And then in the next 1 month, with proper, targeted study, sectional study, you can go from 100 to 120 as well. व्हाट यू नीड टू फिगर आउट सार्थक, अभी इस स्टेज में ये है कि आपको 80 मार्क्स आ रहे हैं, दैट मीन्स उसमें दो तीन चीज़ें हैं. आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की कमी हो सकती है एंड आपको प्रैक्टिस की कमी हो सकती है, एंड दैट इज द रीजन वाई स्कोर इज अराउंड 80. जो रिमेनिंग 120 है, उस 120 मार्क्स में से आपको 20 मार्क्स आप बोल रहे हो पोटेंशियल है, विच आई थिंक इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस. सो एक चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है जिससे आप वो 20 कवर कर सकते हो. एंड रिमेनिंग 100 जो बच जाता है क्वेश्चंस, वो आप कंप्लीटली आपके टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके आप अचीव कर सकते हो उसमें अराउंड 50%. सो दैट वुड बी अ रफ स्कोर ऑफ 150 अप्रोक्सीमेटली, बट इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस ऑब्वियसली. एंड a lot of students asking enough time है या नहीं. टाइम है. there are almost more than 90 days, 95 days for CET examination. And you can see interviews of our students, last year students, Nidhi's interview we have taken. She started preparing around January for CET and she could get into JBIMS. So I think if she can do it and a lot of our students have done it, definitely you can also do it. Okay, Aditya, you can take the next question. How to prepare yourself for the uncertainty of the CET exam. Slot 4 was very hard, copied from CAT and CET. So prep level should be CAT level or basic CET level only. So it should be CET level only. So when you're covering the syllabus,
don't try to cover the difficult concepts, difficult questions, and then start taking the mocks. So when you're taking a mock, also जो mock providers भी होते हैं, and what we have also done is there will be difficult questions in your paper, मतलब that are CAT level or you can say ZAT level, whatever. It will be slightly harder. तो तुम्हारा वो प्रैक्टिस होगा ही फर्स्ट ऑफ ऑल. Secondly, what you have to ensure is that like when those questions come, वो level का you keep on learning and preparing as you go. तो preparation, yeah, should be ऐसा कोई लेवल की तरह मत करना. When you're just starting off, if you're in the syllabus coverage phase, then you can do like the basic syllabus, basic questions and start with the mocks. But mocks में whatever types of question comes, if a hard question comes from CAT और तुम्हें सॉल्व करने नहीं आया, then you must see कि उसे सॉल्व करते कैसे हैं. Like don't leave that. And when you do that, over a time, you are already ready for a higher level than CET because there will be mocks. If you take any test series, there will be mocks जो tougher रहेंगे. Yeah. Okay, I'll take the next question. Hostel in JBIMS, yes, there are a few seats for JBIMS जो मुंबई यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स है. उसमें कुछ सीट्स अलोकेटेड रहता है, वो स्टूडेंट्स को मिलता है, बट नॉट एवरीबडी गेट्स इट. लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टे नियर बाय द कैंपस. फीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी हॉस्टल का प्रोविजन है. वो भी लिमिटेड सीट्स ही होता है, मेरिट बेसिस पे होता है. एंड एक बार कॉलेज Yeah. आपको मिल जाएगा, उसके बाद में आपको उसके डिटेल्स मिल जाता है. It's a very मतलब 20, I think 25 रहता है for each based on merit and या quota भी रहता है उसमें. And it is very cheap because it's a university का hostel and it's very close to the college, like right, like 1 minute from Marine Drive. So great location. But these things you should worry about after getting GBMS. Like once you get into GBMS, seniors will guide you about all these processes. So loan, hostel, if you're not allotted the hostel, so PG options, what you can do. Everyone in among the seniors will be there to guide you in these things. या Omkar, ओके. I think we've already answered your question. Take take CMAT and CET, ATMA MAT. So MAT से एक ही स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर एंड दैट वाज द मैथ टॉपर बिकॉज यू नीड टू गेट अ 99.99 परसेंटाइल इन एनी एग्जाम. तो सीईटी एंड सीमैट में मोस्ट स्टूडेंट्स गेट अ 99.99 percentile because the number of test takers in these two exams are higher. So I would say just focus on these two exams. It is difficult to get in through ATMA or MAT. ATMA से तो किसी को एडमिशन नहीं मिला था लास्ट ईयर. या Okay, Karthik is saying sometimes I feel motivated and sometimes I don't feel like studying even for an hour. How do I stay consistent with my preparation? Very good question. This is the story of every aspirant, even for us. हर किसी के साथ ये होता है. 24/7 या थ्रू आउट द जर्नी ऑफ प्रिपरेशन आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते. So you have to find interesting ways to keep yourself self-motivated. You can take some break between your preparation time. मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रहने के लिए कि हर जो आप टारगेट्स रखते हो प्रिपरेशन करने के लिए, वो शॉर्ट फॉर्म में रखो. ज़्यादा बड़े टारगेट्स मत रखना, लंबे चौड़े महीनों के हफ्तों के टारगेट्स मत रखना. डेली टारगेट्स रखो. ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म प्लान रख के उसको कट डाउन करो डेली टारगेट्स में. एवरी डे 50 to 100 और मोर देन 100 क्वेश्चंस करने का आपका टारगेट होना चाहिए. उसको आप चेंज करने के लिए ऐसा कर सकते हो कि जैसे वर्बल एंड एब्स्ट्रैक्ट दो ऐसे सेक्शन है जिसको पेन और पेपर की जरूरत होती नहीं है. वो आप फोन पे भी, लैपटॉप पे, कहीं पर भी बैठे बैठे विजुअल रीजनिंग से या माइंड से रीड करके सॉल्व कर सकते हो. दैट डज नॉट रिक्वायर यू टू सिट एंड प्रिपेयर इन अ सेपरेट environment, etc. Whereas quants and logical reasoning require you to sit and prepare, right? तो जब आपको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बोर हो रहा है, तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर लो, विच इज इजी. एक पजल ढूंढने जैसा होता है.
थोड़ा सेटिस्फैक्शन भी मिलता है जब सॉल्व हो जाता है। तो ट्राई टू फाइंड वेज टू मेक योर स्टडी इंटरेस्टिंग। अनदर थिंग यू कैन डू इज विथ योर पियर्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ चैलेंज कर सकते हो कि दोनों एक टाइम पे एक प्रैक्टिस टेस्ट दे दो या फिर एक सेक्शनल टेस्ट दो, चेक करो किसको ज्यादा मार्क्स आ रहा है। ये एक हेल्दी कंपटीशन भी अगर आप रखोगे तो वो भी आपको मोटिवेट करेगा, आप भी उनको मोटिवेट करोगे। सो दैट दैट इज अ गुड वे टू कीप योर सेल्फ अप रेडी फॉर दिस। एंड एट द सेम टाइम हम लोग एवरी वीक लाइव सेशंस लेने वाले हैं। तो एवरी वीक आपको कोई डाउट है कुछ है तो आप हमें भी आके पूछ सकते हैं, एंड वील ऑल्सो ट्राई टू मोटिवेट यू एंड cheer you up. She is asking if the syllabus of SNAP and MAT is same for CET and preparing for SNAP and MAT. Yeah, it is more or less the same. Also, the level of these exams is also very similar. Like CAT and CET is at a slightly higher level, and these three exams is at a similar level of difficulty. Um, so if you are taking these two exams, do take the CET to give you more options in colleges. या आई थिंक सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम है, एंड अगर आप क्वेश्चन पेपर भी देखोगे, बहुत सारे मॉक्स, स्नैप मॉक्स एंड मैट मॉक्स एंड सीटी मॉक्स में क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के आते हैं। सो एक अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो बोलते हैं वो सारे ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, except for CAT and CET, which are conceptually very heavy. There are less questions and they have more time. So yeah, all the exams apart from CAT and CET are almost kind of similar, not exactly same, but the basis of the syllabus and the type of questions coming is almost similar. Okay, Tejas is asking, while you were preparing, what was your daily target? How many questions did you practice each day? So same, Tejas, my plan was to finish the syllabus as early as possible. So what I used to do is, हमारे ebooks वाला जो portal है, which has 67 topics and 192 practice tests. So I had that already with me while I was preparing as well. सो 67 टॉपिक्स को मैंने डिवाइड कर लिया था कि कितने दिन में कितना टॉपिक्स करना है। आई यूज टू डू 2 to 3 टॉपिक्स अ डे, जिसके क्वेश्चंस अगर आप सम करोगे तो 100 क्वेश्चंस के आसपास होता है। So I did that within around 45 days, and less than 45 days, I was able to complete my syllabus, consistently prepared for it throughout. And since I already had prepared for NMAT and other exams, I did not take a lot of time. थोड़ा कम time गया मेरे लिए. After that, it was all about giving mocks. This is talking about my second attempt. First attempt में तो मैंने सिर्फ mocks दिए थे, तो तभी तो कोई डेली प्रैक्टिस टेस्ट या कुछ प्लान नहीं था। 31 days थे, 62 मॉक्स दिए। वही प्लान था, which was not a good plan at all, and hence I did not get into JBIMS also that year. Okay. What is the ideal score for JBIMS? There is no such ideal score. Um, so you can start with targeting 150, but once you reach 150, also don't stop there. तुम्हें उसके बाद भी improve करना है. Because as I said, mock score से कुछ नहीं होता है, right? You have to keep improving till CET, but you can take 150 as a number, as a target initially. But once you reach there, then aim higher. How Yeah. many mocks to give till December end? Sarthak, depends on where you are currently. If you are at 120 plus, I think you can take one mock a week. But anything lower than that, just take, I think, two mocks in December, and that should be fine if you are at 100. Because after each mock, तुम्हारे इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज और गैप्स बहुत ज्यादा रहेंगे, उसको तुम्हें एवरी डे कवर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही नेक्स्ट मॉक देना। अदरवाइज देर इज नॉट अ लॉट ऑफ देर इज नॉट अ लॉट ऑफ point in giving the mock. So two is a good number. If you're 120 plus, then you can give one a week. Score for general, as I said, ऐसा कोई टारगेट नहीं होना चाहिए बिकॉज सीईटी का डिफिकल्टी कैन चेंज Yeah. as you're preparing. So just target 150 in mocks and getting a good rank as well.
But once you do that, also keep improving continuously. Yeah. Another None of the freshers. freshers can get 10 plus, I think 10 lakhs plus, as they don't have professional certification like CFA, CA, CPA, etc. Because companies like ENY had an offer for CPA MBA with 4 years of experience at 20 lakhs at IMK. Okay, we have someone from EMY. So I Yeah. think Shrikant can take So this. I did not understand the question first of all, but in my case, when I was placed in EY, there was no requirement of any certification. I did not have any CFA, etc., etc., whatever certifications are written over here. And neither did I have 4 years of work experience, and neither did I have 60% plus in my graduation, and 10 plus wala number also I don't know. And obviously the CTC written by you is less. We had a better CTC. Even back to juniors, the CTC was higher. I've made a video on this, how to get into EY, on our YouTube channel. Please check that out. उसमें मैंने clearly mention किया है. IMK का I don't know. No idea about IMK, but for JBIMS it is definitely different. During my time, there were 9 students from JBIMS who got placed into EY, including me. And उसमें freshers भी थे, उसमें 4 एक्स वाले भी थे, उसमें 2 साल के वर्क एक्स वाले थे मेरे तरह, उसमें 2 साल के गैप वाले भी थे. हर टाइप के स्टूडेंट्स थे क्लास के. हर डिफरेंट प्रोफाइल के स्टूडेंट्स थे. एंड इट completely depends upon your interview. Once you crack JBIMS, I don't know about the other colleges, so sorry I cannot comment on that. But yeah, definitely इतने certifications तो required नहीं है. They're not necessary. I have that on 5th I, Jan. How should I manage that and CET? Um, so if you are um, really aiming for XLR and you have already prepared so far, I think even after 5th Jan, you have enough time for CET if you are seriously preparing for that. तो तुम्हारा CET में काफी कुछ cover भी हो जाएगा. After that, you can just take the mocks and be prepared for CET also. 8 weeks, 9 weeks is enough time. So if you are taking the ZAT, then take it very seriously. 1 month, keep your focus on ZAT, and then you can switch gears to CET. yeah. Okay, this we answered. Okay. Is it worth giving CMAT because there are only 18 seats for JBIMS? And please suggest some colleges through CMAT. Or should I skip CMAT and focus on CET? So that 18 seats which are there for all India category, wo, I think with CET score also you can target that, but the cutoff for that is 99.99. Coming to JBMS, it's not about the number of seats, it's almost about the percentile. So for open category, Maharashtra students, the cutoff is 99.94, whereas for all India students, it's 99.99. I know this is very, close call, very difficult. Someone getting 99.92 may not get into JBMS, but that is a fact. And बहुत सारे सालों से ऐसे ही होते आ रहा है. So the competition is there, no denying that. But still, there is enough time to prepare for it and try for that. Coming to And it's CMAT, worth definitely it? worth giving because Yeah, only 18 seats to board in sector 18 seats is a lot because general even for Maharashtra candidates there are 50 seats or 40 seats, 40 42 seats. something. Yeah, So 18 seats is also a very big number, and half the seats in these 18 seats are filled through CMAT. Almost the other half is filled through CET. So imagine like 8, 9 students are coming through CMAT, so it's definitely worth it. CMAT में obviously you have two different sections जिसके लिए तुम्हें prepare करना पड़ेगा, which is not very difficult. You just have to take the mocks and spend 1 week or something to prepare. But it's definitely worth taking those exams because guys इसमें कुछ downside ही नहीं है. There is nothing to lose. ऐसा नहीं है कि तुम्हारा स्कोर सीमांट में बैड होगा तो कुछ होगा. If it is a good score, then it will be helpful. If it is bad score, you can take CET. yeah.
आई थिंक इवन फॉर प्रैक्टिस पर्पस सीमैट दे ही सकते हो, इट्स नॉट अ बैड थिंग। उसमें भी काफ़ी सारे कॉलेजेस है, लाइक NIBM है, एंड काफ़ी सारे नेशनल लेवल कॉलेजेस है जो सीमैट स्कोर लेते हैं, सो डेफिनेटली गो फॉर इट। इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू स्किप इट ऑल टुगेदर। ओके, how much questions per topic needs to solve for getting clarity on that topic? Again, 100 questions is what I generally suggest to all my students, and that is what has been working for them as well. Okay, can you please tell me about placement? CET crack होगी नहीं होगी? It's different things, but we just need to know about placement. Uh, so you can सीईटी check क्रैक out होगी the, नहीं होगी, प्लीज डोंट कीप दिस एटीट्यूड. You please focus on cracking CET, and then once you get into JBIMS, uh, just be rest assured कि so JBIMS, it's not that तुम कहीं पे JBIMS का डिग्री का सर्टिफिकेट दिखाओगे तो यू विल गेट अ जॉब. ऐसा तो नहीं हो सकता है, राइट? yeah, What JBIMS will give you is hundreds of opportunities, hundreds of companies will be there. There are so many case competitions, there are so many opportunities that you will get, but you will have to build yourself to that. अगर तुमने वो किया तो तुम्हें 100% मिल जाएगा placement, and a very good package, right? And obviously, the numbers are out in the placement report. JBIMS top companies 25, 26, 27 lakhs ka package. So at this point, just focus on cracking CT, because placement information say, matlab, how will it help you? I'm not sure. So just like this time, you need to put your heads down, focus on CT. उसके बाद I can tell you this thing for sure, and each and every alumni of JBIMS will tell you that you won't regret coming into JBIMS. yeah. So Mronal is asking in which month should we ideally finish the syllabus? January is the month when you should ideally finish the syllabus at by January, or by mid January is what you should try to finish at, because उसके बाद में अगर आप जनवरी एंड में भी फिनिश करते हो तो फेब्रुवरी फुल मंथ है, अराउंड 30 डेज से 45 डेज है आपके पास मॉक स्ट्रैटेजीज लगाने का, मॉक एनालिसिस करने का, और उसके ऊपर भी वर्क करके इम्प्रूव करने का। सो दैट्स व्हाई आई जनरली सजेस्ट 45 डेज इज गुड सिलेबस के बाद में। तो अभी ऑलमोस्ट 90 डेज है, तो 45 डेज सिलेबस कंप्लीट करने में फोकस करना चाहिए, और उसके बाद में नेक्स्ट 45 डेज आप फोकस कर सकते हो आपके मॉक्स के स्कोर्स इंप्रूव करने के लिए, आपके सेक्शनल स्ट्रैटेजीज अप्रोचेस इंप्रूव करने का। सो आई थिंक दैट इज द रफ आइडिया विच यू शुड गेट इज जनवरी, आई फील। ओके, And I want to join your course, but I'm stuck with an offline class. Before admission, tell have given आई थिंक fake इज दे info हैव about our गिवन students. फेक। Oh, ओके, um, okay, that's really sad and not right by that institute. But you can get in touch with us. Let's see what we can do. या If you want to take admission in our course. Um, One thing is for sure, we all our students, you can reach out to them on LinkedIn, anything. It's public information. हम लोग के साइट पे भी है. They are our actual students. We will not give fake info about our students' success. या एंड वन मोर थिंग, अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है तो कोर्स मटेरियल को कैसे यूज करना है, उस मटेरियल से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है, इसके लिए मैंने काफ़ी सारे ट्रैकर्स एक्सेल शीट्स बनाए हैं। अल्टीमेट सिलेबस ट्रैकर करके एक बनाया है, वो मैं शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। और उसी की तरह और भी काफ़ी सारे टूल्स मैं बनाऊंगा जो आप और यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये टूल्स यूज़ करना है तो भी आप हमको रीच आउट कर सकते हो, हम लोग आपको ये प्रोवाइड कर देंगे।
So we generally focus on students के scores improvement. That is our idea generally. So please, even if you have taken admissions, you can still reach out to us. We will still be happy to help you. Okay. Okay. Sahil is saying, I want to meet you, Shrikant sir, before CT exam. So is it possible? And also want to visit JBIMS campus. So is it a good idea to travel from Pune to Mumbai just to see the campus and get motivation? Uh, if you want to meet me, I don't stay near to JBIMS, but yeah, you can meet me. You can reach out to us on the top percentile, or you can obviously call us anytime. I'll be there to guide you, whatever information you need. बट अगर आप एक दिन के लिए पुणे से मुंबई आके जीबीएमएस देखना चाहते हो तो व्हाई नॉट, दैट इज़ अ गुड आइडिया, बहुत सारे लोग करते हैं। लास्ट ईयर हमारे बैच में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जूनियर बैचेस में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअल में जेबी आने से पहले जेबी कैंपस देखने आते हैं और उसके बाद वो मोटिवेशन लेते हैं और कन्वर्ट भी करते हैं। मतलब हर कोई नहीं करता, बट बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स में से लोगों ने किया है और उनका कन्वर्ट भी हुआ है। So I don't know if this motivation trick works or not, but it definitely works for some people. So yeah, they can go ahead and do that. Each and every shortcut is available in YouTube for free. Then what's best in your class? Yeah, I think I can answer Very, this question. yeah, Uh, very good question. yeah, actually, this is a very good question. So yes, each and every shortcut for every exam is available on YouTube for free, even for UPSC examination or whatever examination you take. And that is what we are trying to do with the top percentile as well. कि कंटेंट एक चीज होता है, प्रैक्टिस एक चीज होता है, और गाइडेंस एंड मेंटरशिप एक चीज होता है। कंटेंट यूट्यूब में अवेलेबल है, बट प्रैक्टिस और गाइडेंस के बिना सिर्फ कंटेंट से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो कंटेंट आप बोल रहे हो फ्री में अवेलेबल है। ये 1 लाख लोग जो सीईटी देते हैं सबके लिए फ्री में अवेलेबल है। बट सिर्फ फिर जेबी में सिर्फ 50 लोग ही क्यों आ पाते हैं? क्या डिफरेंस है उन लोग के इसमें जिसके वजह से वो जेबी आ पाते हैं और एनी अदर एग्जामिनेशन क्रैक कर पाते? तो वो जो दो चीज ऑफ डिफरेंशिएशन इज द प्रैक्टिस एंड अ मेंटरशिप एंड अ गाइड हु कैन पुश यू इन द राइट डायरेक्शन, एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू। हमारे कोई भी वीडियोस लास्ट 370 ऑलमोस्ट 400 वीडियोस होंगे यूट्यूब में, आप जाके देखो हर वीडियो में देर इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन विच वी आर पुशिंग एवरी स्टूडेंट टू कि आपको इतना प्रैक्टिस करना है, इतना सॉल्व करना है, इस तरह से करना है। क्यों करना है? बिकॉज हमने वो किया है and वो आपको हेल्प कर सकता है, राइट? एंड प्रैक्टिस के लिए वी हैव, अगेन एज आई मेंशन्ड, अ लॉट ऑफ मटेरियल। 46 मॉक्स हमारे हर कोर्स में अवेलेबल है जो सारे टाइप के डिफिकल्टी लेवल्स को क्लियर करता है। सो यस, फ्री में सब अवेलेबल है, बट सबको जेबीएमएस में एडमिशन नहीं मिलेगा। देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू पुट इन एक्स्ट्रा। if you can do it self study basis पे, then we also have a course for that, which is the TTP solo course, जिसपे content again is much more curated. And one more thing, content for everyone could be different. In our case, each and every element of our course is designed by a 99.99 percentiler only. So since हर चीज 99.99 परसेंटाइल से डिलीवर हुआ है, तो कंटेंट का क्वालिटी में भी कोई डाउट या फिर कोई कमी नहीं है। So that is one thing. And obviously YouTube पे भी अगर होगा तो it is there definitely. No, nobody is denying that. Okay. Working in shift, how should I prepare for CET? What should be my daily, weekly, and monthly target? Please help. So Shubham, I've made a video particularly for working students, जिनको टाइम नहीं मिलता है प्रिपेयर करने के लिए। उनके लिए भी मैंने बोला है कि आप डे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। आपको प्रिपेयर तो हर दिन करना ही पड़ेगा। ऐसा अगर आप देखोगे कि 90 डेज है सीट एग्जामिनेशन के लिए, और यू कैन से 15-20 वीक्स है, राइट? तो इतने वीक्स में
आप अगर सिर्फ सैटरडे संडे पढ़ोगे तो आपके नंबर ऑफ डेज ही बहुत कम हो जाएंगे, राइट? तो ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आपको सिर्फ गिने चुने डेज के लिए प्रिपेयर करना है। आपको डेफिनेटली हर दिन प्रिपेयर करना ही है। इफ यू इवन इफ यू वर्किंग, इवन इफ यू कॉलेज स्टूडेंट, कोई भी हो या फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो? मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग ऐसा टॉपिक्स उठाओ जिसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा रिक्वायर्ड है, विच इज लॉजिकल रीजनिंग। आफ्टरनून लंच के टाइम पे आप यूज कर सकते हो आपका टाइम क्वांट सॉल्व करने के लिए। एंड इवनिंग आप वीएआर से एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो। बट अब मैंने बोल तो दिया करने के लिए, बट कितना टाइम करोगे? अगर आप सिर्फ 15-15 मिनट्स भी देते हो पूरे मॉर्निंग 9 o'clock या 7 o'clock से लेके 12 बजे तक, ये जो मॉर्निंग का टाइम है, सिर्फ 15 मिनट देते हो। आफ्टरनून के टाइम में सिर्फ 15 मिनट देते हो, इवनिंग के टाइम में सिर्फ 15 मिनट देते हो, रात को भी 15 मिनट देते हो, तो एक दिन में आपका 1 आवर का प्रिपरेशन तो एटलीस्ट हो रहा है, विच इज गुड। rather than not preparing at all, अब 1 आवर भी प्रिपेयर करोगे तो इट्स गुड। ऑब्वियसली 1 आवर इज नॉट इनफ, 2 आवर्स तक आपको पुश करना चाहिए। 15-15 मिनट्स के दो ब्रेक्स कर लोगे अगर, तो 2 आवर्स हो जाएंगे। तो आपको ऐसे पॉकेट्स ऑफ टाइम है ना, निकालते रहना पड़ेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन टाइम, एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू वट एवर शिफ्ट यू वर्क इन, राइट? 4 आवर्स के ड्यूरेशन में या 3 आवर्स के ड्यूरेशन में 15-15 मिनट के भी आप दो पॉकेट्स जैसे टाइम भी निकाल के प्रैक्टिस से कंटेंट पे वर्क करोगे, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। एंड आई थिंक इसके अलावा आपको वीकली एंड मंथली टारगेट प्लान्स नहीं रखना चाहिए। 45 डेज में सिलेबस कंप्लीट होता है। ये जितने भी हमारे स्टूडेंट्स ने JBIMS क्रैक किया है उनके एनालिसिस के थ्रू मैं ये नंबर बोल रहा हूँ कि 45 डेज है। 45 डेज ऑलमोस्ट हमारे प्रिटी मच लास्ट 4 साल से एवरेज स्टूडेंट्स को लगता है सिलेबस खत्म करने के लिए। सो डेफिनेटली हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। JBIMS में एडमिशन लेना इट्स नॉट एन इजी टास्क ऑब्वियसली। 45 days is still a very small number, but you have to, put in efforts to get that syllabus covered. And then you still have more 45 days to work on your mocks, your strategies, your approaches, etc. Okay, I think we got a lot of questions. So let's take a few questions from the bottom, Aditya. Yes. Okay, what is the criteria for being a Maharashtra student? I have done my 11th in BMS, but first to 10th in Karnataka. I'm a Maharashtra student for JBIMS. So Vinay, you just have to get a domicile certificate. अगर आपको domicile certificate मिलता है महाराष्ट्र का, that means you are a Maharashtra candidate. Simple as that. तो अब बस एक काम करना, महाराष्ट्र के जो ई सेवा ऑफिसेस रहते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, वहाँ जाके आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए एप्लीकेशन डालो। अगर वो बन गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो लोग आपको बता देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, देन यू आर अ महाराष्ट्र स्टूडेंट, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट while एडमिशन। सो इफ यू स्टार्ट नाउ इट्स गुड। ओके, ठीक है। What should be the strategy for a working professional? Yeah, as I mentioned, Shreyas, this is how you can do it. You can divide your time in 15-15, 20-20 minutes and do that. Okay, we were saying I can only afford to purchase TDP solo course due to budget constraint. Is the course helpful as much as others? So TDP solo course is a self-study course. The content is provided by 99.99 percentilers. There are 200 practice tests which has 8,000 questions. There are 40 sectional tests again which has 2,000 questions. Then there are 46 mocks. So all in all 25K के आसपास questions है, which is like more than sufficient within your budget. Plus lecture content अगर आप देखोगे तो 200 hours plus है। And if you see the number of days, 100 days है। Every day if you see 2 hours का content also, तो भी आपका 100 days लगेंगे वो फिनिश करने के लिए। सो व्हेन इट कम्स टू योर पॉइंट की इज इट इनफ, इट इज डेफिनेटली इनफ। वी obviously suggest you to go for fast track or elite course because उसमें mentorship वाला element है, and again that is actually very important. But yeah, what we provide in solo course for 6,500 is what others are providing for 20,000 or 18,000, 19,000. So
we have kept budget constraints in mind of students, and our general purpose is to help students at the end of the day, and that is what we are trying to do. Okay. I saw some questions if about can a fresher crack CET? Yes. Even if you see the JBIMS placement report and in our batch also, and at TTB also, two of our co-founders were freshers, Anay and Harsh. Yeah. In our batch, in any placement report, if you see the latest placement report also, you can see that 20 to 30% of the batch is freshers, and they would have cracked CET in the first attempt. So it does not matter. If you have the right guidance, right preparation in the first attempt itself, you can definitely crack JBIMS. Yeah. I have one more question. Someone has written, do fresher get 27 LPA package? Actually, freshers get more than 45 LPA package also, 48 LPA packages also. So 27 का डबल भी मिलता है. Pressure and उस पे इतना नहीं है. See, it हाँ. all depends on the person, what that person has achieved, what that person has done in the 2 years at JBIMS. If Yeah. that fresher has gotten the first rank in the batch, like the gold medalist, right, has uh, put in a lot of effort in the case competitions, put in a lot of effort for placement prep, build the CV in that way, they can get any package. ऐसे कोई भी restriction नहीं है Yeah. on what is And the again, package a fresher can get. And ENY, see, some companies do give, will just give a higher salary to work experienced people. So yes, if you're talking about that specific role in ENY, which pay 20 lakhs in IMK, I'm not sure if the numbers are true by the way, but whatever it is, for the same role, yeah, to a fresher, they would have paid a little less. That would have been the case, but ऐसा नहीं है कि they get very less and they are not eligible for certain roles. ऐसे नहीं होता है. Everything depends on what you do. It's not about um, okay. AD has written that in IMK EY 20 lakh दे रहा है 4 years experience. Then how it offers more at JBMS, because JBMS is not IMK first of all, and ज़्यादा दे रहा है because I have my fresher friends in EY. आप profiles पे जाके check कर सकते हो. also. Don't compare the colleges कि यहाँ दे रहा है तो यहाँ And दे सकता है बहुत नहीं. factors होते हैं इसमें. Like I'm not sure why you are constantly. See, first thing, just talking about the salary, this role comparison is not going to be helpful for any student in the preparation phase. ये बहुत स्टूडेंट्स करते हैं कि कॉलेजेस कंपेयर करेंगे, प्लेसमेंट देखेंगे, ये कॉलेज का बेटर है वो. इट डज नॉट मैटर. जबकि अगर तुम्हें वो दो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है तो ये सब डिस्कशन का कोई भी पॉइंट नहीं है. Yeah, Once you get into JBIMS, IMK, then you can reach out to us. You can reach out to anyone at IMK. They will help you compare ki what is the situation where. But इसमें करने की there's no point. A lot of factors, just to answer the question, a lot of factors define the package. One is the role. I'm not sure what role was there in ENY at IMK, but when Shrikant and R went, it was a strategy consulting role in EY Parthenon. EY is a big company. बहुत roles yeah, रहते हैं उसमें. Right, that is one thing. Secondly, based on the year also, the packages company continuously refine and change the packages based on the market. So we are talking from our experience when we graduated in 2022. This package, I'm not sure is for which year. So there are a lot of factors. But again, the point is that there's no reason to discuss all this at this point. yeah. I saw a very interesting question by Sahil. He's saying ki how different was your preparation level, approach, mentality? Because many students complete the syllabus, give mocks, still can't get into JBMS. Any secrets, please? So very interesting question, Sahil, and I would like to answer it. There is no secret sauce, first of all. I'll give you example of students. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 1 साल रिपीट करते, 2 साल रिपीट करते, 3 साल, और कुछ कुछ में 4 साल भी रिपीट करते JBIMS आने के लिए. जो 4 साल दे रहा है उसने 4 साल में दे दिए रहेंगे 100 120 मार्क्स.
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ 2.5 मंथ्स में प्रिपेयर करके JBIMS आते हैं। इन्होंने 2.5 मंथ्स में दिया होगा 15 to 20 मार्क्स। और दोनों स्टूडेंट्स सेम टू सेम है, दोनों स्टूडेंट्स में कोई सीक्रेट या कोई डिफरेंस नहीं है। बट द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज, जो बंदा JBIMS क्रैक कर रहा है ना, वो जब एग्जाम दे रहा होता है, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को 99.99 परसेंटाइलर ने ऑलरेडी 3 या 4 बार सॉल्व किया है, इसीलिए वो 30 सेकेंड या 45 सेकेंड में सॉल्व कर सकता है। बट एक एवरेज स्टूडेंट उस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख रहा है, इसलिए वो उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा है 40 सेकेंड्स में, उसको लग रहा है 2 मिनट। दिस इज द ओनली सीक्रेट। Anyone who is a 99.99 percentiler, if he is seeing a question in CT examination, he has solved that question or question similar to that at least 4 to 5 times, one time, two time, three time, four time, whatever. And that is the reason why he is being able to solve it even faster. Whereas other student is seeing the question for the first time, तो वो obviously नहीं solve कर पाएगा. So this is the only secret. And the secret is practice. जितना ज़्यादा practice, जितना ज़्यादा targeted practice, आपको किस area में practice करना है वो पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मैं एक एनालॉजी में भी आपको बता सकता हूँ। जिम हर कोई जाता है, बट हर किसी की बॉडी 1 साल में बनती है, किसी की 4 साल में बनती है, किसी की 5 साल में बनती है, किसी की 6 महीने में भी बन जाती है। तो क्यों, जिम तो सबका सेम ही है, तो क्यों किसी का 6 महीने में बन रहा है और किसी के 4 साल में बन रहा है? बिकॉज वो 6 महीने में उतना क्यूरेटेड ट्रेनिंग कर रहा है, उसे क्या करना है पता है, उसको एक ट्रेनर बताता है कैसे फॉलो करना है, क्या चीज़ करना होता है, कितना डाइट लेना होता है। सिर्फ जिम लगाने से बॉडी बन जाती है क्या? नहीं। इज द सेम लॉजिक विच अप्लाइज टू CET। आपको प्रिपेयर करना है तो पता होना चाहिए कि कैसे प्रिपेयर करना है, कितना प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक्स कवर करना है, आपका वीक एरियाज कौन से, आपके स्ट्रेंथ एरियाज कौन से, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। एंड दैट इज हाउ इट हेल्प्स। बट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन साहिल। हर किसी को ये पूछना, मतलब डाउट आता है कभी ना कभी कि क्या सीक्रेट है, क्या सीक्रेट है। मैं भी मेरे पूरे जर्नी में जब मैं CET के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मैं भी खुद को पूछता था ऐसा क्या सीक्रेट है जो मेरे सीनियर्स, मतलब मैं जब JB नहीं क्रैक किया था तब मैं सोचता था कि क्या सीक्रेट है भाई ऐसा जो इन लोग ने कर लिया और मुझसे नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो बाद में मुझे सेकंड अटेम्प्ट में पता चला कि सीक्रेट इज नथिंग बट प्रैक्टिस। I think secret is that I think one more thing, if ऐसे कुछ secret तुम्हें define करना है तो two things actually. तो as people have said कि content मिल जाता है, हमारे कोर्स में भी है, books, mocks, everything you have. What do you have to bring to the table? और तुम्हें क्या करना है? Just two चीज, दो चीज है. First is the belief that you can actually get in. बिकॉज बहुत या लोग ऐसे बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड से इफ यू ट्राई टू अप्रोच JBIMS एंड CET, तो यू आर ऑलरेडी अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ द कंपटीशन बिकॉज इतना द नंबर्स आर सो डिफिकल्ट. लाइक इतने कम सीट्स है, इतने ज्यादा टेस्ट टेकर्स है. इफ यू आर नॉट बिलीविंग कि तुम जा सकते हो JBIMS में और तुम्हें जाना ही है एट एनी कॉस्ट, then it is going to be impossible. Those students don't get in. Whoever is JBIMS prepared thinking that they could get into JBIMS. So that makes a huge difference. दूसरी चीज है मोटिवेशन बोलो, डिसिप्लिन इज अ बेटर वर्ड आई वुड से. बट तुम्हें वो प्रैक्टिस एवरी डे, तुम्हें तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हारे फ्रेंड्स बाहर जा रहे हैं, फ्राइडे वीकेंड ट्रिप्स जो भी है जा रहे हैं, बट इफ यू आर disciplined and continuously practicing, putting in a lot of time, and with the right guidance, हो जाता है. So I think this discipline and belief is very, very important. Discipline more, uh, and they both go hand in hand, kind of. So I think a lot of students are still online. I will request everyone to please एक बार like कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, बिकॉज CET एग्ज़ाम तक हम लोग ये लाइव सेशंस एंड वीडियोस का सीरीज ऑन रखेंगे। और CET कोर्स, TTP कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं कि TTP कोर्स कब स्टार्ट होता है। सो वी स्टार्ट को लास्ट वीक 1 दिसंबर से हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है, न्यू बैच। आप ज्वाइन कर सकते हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CET। व्हाट इज देयर इन आवर कोर्स? अगेन थ्री थिंग्स: कोर्स
बनाया कंटेंट विच इज बाय 99.99% प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट सेक्शनल टेस्ट मॉक्स है। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग हमारा यूएसपी आप बोलो जिस हमारा रिजल्ट क्यों इतना अच्छा आता है इज बिकॉज वी फोकस ऑन मेंटोरशिप फॉर आवर स्टूडेंट्स। ठीक है, हर स्टूडेंट हर हफ्ते एक जेबीआईएमएस स्टूडेंट से बात करता है, हमारा हर टीटीपी स्टूडेंट दे गेट एक्सेस टू टॉक टू वन जेबीएमएस स्टूडेंट एवरी वीक, दे कैन टॉक टू अस एज वेल। सो अगर आप हर वीक जेबीएमएस स्टूडेंट से बात करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर पता होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो 1 वीक 2 वीक्स वेस्ट भी हो जाता है तो उसको वापस वापस पाथ पे कैसे लाना एक्सेट्रा। तो थ्रू आउट द जर्नी ऑफ ए प्रिपरेशन यू आर गाइडेड बाय द बेस्ट माइंड्स। And yeah, our course is started on 1st of December. So if you are willing, then you can definitely join in. Yeah, it's a very good time to join because um, CAT is over. So I know a lot of you will be focusing on CET. Secondly, just two or three like three lectures have happened this weekend. जिसके recordings भी तुम्हें मिल जाएंगे in your portal once you join. So you can join in the next 2 days, and you can join our live classes that happen on the weekends, which are taken by our students. And those students, one of them is a 99.99 percentiler, Rajat, who got into JBIMS as an all India student. So, I mean, I saw a lot of questions कि इतने कम seats है all India students का. Rajat was our all India student who got into JBIMS with a 99.99 percentile. And now he is teaching. Very, students love him and are Yeah, really fond of him. Another one is Dhruv sir, which who cracked Sidnam and who is a verbal expert and has a really good command on verbal. So they will be teaching you, and I'm sure it'll be really helpful for anyone who wants to take CET. थर्टी नहीं फर्स्ट दिसंबर से स्टार्ट नहीं हुआ. इट हैज स्टार्टेड फर्स्ट। ऑलरेडी. 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था एंड जस्ट 3 live lectures have happened last weekend. So it is a good time to join now. You will get the recordings of those lectures and you can join in for the live classes this weekend. Yeah, Tirtha Shetty How saying, much time will I get access to after enrolling? Within a few hours, 6 to 8 hours, they just you will get access. So yeah, don't worry about that. yeah, Tirtha is Another question asking, about the new batch. Sai okay, was saying, new batch of CD has just launched. Just 3 lectures have happened, so it is a good time to join. For those 3 lectures, also you'll get the recording in your portal as soon as you join, and you can join the classes on the weekend. So you have not missed anything. There will not be any, yeah, just to clarify, there will not be any more batches after this. So please join, guys, if you are interested in joining the top percentile course for CET. Our results speaks for themselves, and yeah, no, there will not be another batch. Also, mentoring is done directly by JBIMS students. So please join ASAP because those slots are also limited because they can only accommodate a certain number of students. So what if you are yeah, interested, please join fast because once their bandwidth is completed, because we can't give a lot of students to each JBIMS mentor also. So please join fast. yeah. ठीक है, I was taking Tirtha's question. Sir, I'm an average student as I'm preparing in my gap after graduation. So is it possible to do it in my first attempt as there are many repeaters? So, Tirtha, please do not focus or worry about repeaters. There are going to be repeaters, there are going to be freshers, there are going to be people with work experience in JBIMS. You can take a number of 30%. In every batch of JBIMS, there are 30% of students who are gap year preparation wale, 30% repeaters, 30% freshers, 30% work experience wale. So it really doesn't matter.
एंड कमिंग टू द पार्ट कि आप कर सकते हो या नहीं, सो a lot of students every time they call they ask this thing कि सर मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरा JBIMS कन्वर्ट हो सकता है या नहीं. And the reason why I can answer this question very, very, honestly is because I myself, I am a very average student. I have 57 percentage in my graduation. And even after that, I was able to convert JBIMS. So the reason why we started the top percentile is that this exam is doable only if you are pushed and focused in the right direction. आपको अगर पता है कैसे करना है तो आप कर सकते हो. मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट भी कर सकते हो, तो कोई भी कर सकता है. दिस इज द एंड गोल ऑफ योर क्वेश्चन. एंड देन एक और चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इज इट पॉसिबल. तो उनके लिए एक आंसर है. लास्ट 4 इयर्स में TTP के 50+ स्टूडेंट्स JBIMS में है. उसके सबके नाम और वो सब हम लोग ने हमारे वेबसाइट में डाला है, डेफिनेटली जाके चेक कर लो. 50+ स्टूडेंट्स ही है JBIMS के. हर स्टूडेंट जो है JB में, उसने एक डिफरेंट टाइम पे प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है. किसी ने 4 साल पहले किया, किसी ने 1 साल पहले किया, किसी ने 2 महीने पहले किया, किसी ने 3 महीने पहले किया. तो आंसर इज डेफिनेटली यस कि इज इट पॉसिबल या और नॉट. आंसर इज यस, बट इज इट पॉसिबल बाय यू इज द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ. क्या आप वो कर सकते हो, ये आपको पूछना चाहिए. क्या कर सकते हैं लोग? यस, कर सकते हैं. अगर वो आपका क्वेश्चन है तो उसका आंसर यस है. बट क्या आप कर सकते हो, उसका आंसर आपको ढूंढना है. एंड वी आर डेफिनेटली हियर टू गाइड यू फॉर दैट. सो आंसर इज यस, डेफिनेटली कर सकते हो. रिपीटर्स के बारे में मत सोचो, कंप्लीट फोकस आपके प्रिपरेशन पे डालो. आंसर इज डेफिनेटली यस, एंड वी बिलीव एवरी स्टूडेंट हैज दैट कैपेबिलिटी टू डू इट. सो पुश फॉर दैट. Umar I think as we has, take a last few yeah, questions, yeah, um, yeah, Umar, I was just going to answer your question. I have done BE in 21 pursuing ME, don't have workouts. Shall I try for JBIMS? Yes, Umar, you should try. I have done my BE from Sardar Patel. उधर भी ME का कोर्स था, तो I know that ME में job opportunities are not that great unless you're doing it from the top IITs in India, right? So I'm not sure which college you are in, but I can tell you that JBIMS में जो opportunities मिलती है, job opportunities, because at the end of the day, everyone wants a good, reputed, high-paying job. You will get that at JBIMS. It'll be, I think, from what I've seen, it's a little difficult to get it in an ME program unless you are from a top IIT. So you should definitely try. And since you're asking the question, I think that maybe you feel that ME and engineering it might not be the type of job you want to do. Um, so I think MBA is the perfect way for you to switch your career stream from yeah, engineering to whatever else you want to do. yeah. Just one more follow-up question by Tirtha. She said, Sir, as you said, 45 days are enough for portion completion and CMAT is on 25th Jan and CET in Jan's and CET in okay, March, I mean. So how to manage both CET and CMAT? See, Tirtha, firstly, you should give one CMAT and one CET mocks. ठीक है. After you give one CMAT and CET mocks, आपको पता चल जाएगा कि दोनों एग्जाम में जो लॉजिकल क्वांट्स वर्बल और DI वाला पार्ट है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं. तो आपका सिलेबस 45 डेज में अगर आप फिनिश करते हो तो वीकली आप एक CMAT मॉक दे दो. अभी दिसंबर वाला मंथ चल रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर. यू गिव वन CMAT मॉक एंड वन CET मॉक एवरी वीक. And by that, by the time of 25th January, you would have given more than 5 CMAT mocks. By coming closer to 25th Jan, आप mocks ज़्यादा increase कर सकते हो. आप एक CMAT एक CET पर वीक के जगह पे दो CMAT mock देना जनवरी वाले मंथ में. एंड CET और CMAT को कंपेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बिकॉज सेम लेवल के पेपर है. CET और कैट बहुत डिफरेंट है. अगर आप CET और कैट का पूछते हो तो कंप्लीटली डिफरेंट लेवल ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना पड़ेगा, और हर किसी को पता है. आप एक मॉक दे दोगे, आपको समझ में आ जाएगा. तो मैं भी वही सजेस्ट करूंगा, आप एक CET मॉक देना और आप एक CMAT मॉक देना, आपको समझ में आ जाएगा. पैटर्न में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्ट्रैटेजी में डिफरेंस है, बिकॉज CMAT में नेगेटिव मार्किंग है, CET में नहीं है. सो योर एक्यूरेसी विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल.
So my suggestion for everyone who is preparing for CMAT and CET is that syllabus side by side आपको topic test practices देते ही रहना है. But for CMAT आप every week एक mock दो. By the end of December एक mock या दो mock depending upon the time that you have in hand. कोई स्टूडेंट वर्किंग है, कोई स्टूडेंट नॉन वर्किंग है, तो जो नॉन वर्किंग है वो दो दे सकता है, तो जो वर्किंग है वो एक ही दे पाएगा. तो आप वो देना. एंड देन जनवरी के क्लोज में आते आते जब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा तभी आप मॉक्स का स्पीड इंक्रीज कर सकते हो. ओके. Are mentoring sessions offered if one opts for mocks only? No, so for only mocks, mentoring is not offered. The thing is about mentoring, I also saw some questions about just launching a paid mentoring program. Um, so at this stage, guys, I'll just explain about the mentorship a little. It is all connected, right? The mentor is going to tell you to practice a few things. The mentor is going to be there for you when you analyze a few things. So when all these aspects are there in a course, it is much easier for the mentor to guide you and tell you what to do next. Only a mentorship program will not give you that much value, but when you take a whole package that includes the mentoring program, all the aspects that you need are covered. Only the mentorship program also, like only concept, will not give you that much value. But when everything comes together, uh, you can be sure that everything that you need to crack CET, you have. The only thing that you have to get is the discipline and the belief that you can do it. ओके. वन लास्ट क्वेश्चन अथर्वा. इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स डाले आपने. इज JBIMS गुड फॉर ऑपरेशन? JBIMS is good for all of the courses: operation, marketing, finance, whatever. Aditya is here from finance. He has work experience. He got placed into Deloitte. I am a marketing guy from JBMS. I got placed into EY. Both are consulting. Operations people, one of our students got placed into Swiggy last year. So yes, 100% अच्छा है. हर एक ब्रांच, हर एक चीज अच्छा है. अभी इस टाइम पे आपको जेबीएस में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज अब बस लिंक्डइन पे जाके देख लेना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है. आपको समझ में आ जाएगा कि जेबीआई का लेगेसी बहुत पहले से ही है, 50+ ईयर्स से है. So yes, every course is good. You will be, known. People will recognize you if you are from JBMS. So definitely everything is good Yeah. about See, JB. Athara, if you are operations ही करना है for sure, then obviously IIM Mumbai का operations का legacy is much better because it was Nitty before this, and it is the best school for operation. ऐसा है तो you should target IIM Mumbai. But if you want JBIMS, so don't worry about the specialization now because JBIMS में you have to choose a specialization in the second year. First year is common for everyone. Yeah, First one में you have to study finance subjects, marketing subjects, operation subjects, HR subjects, everything, and then you can see what you like, right? So don't think about this now. But if you have तुम्हें पता है कि यही तुम्हारा कॉलिंग और तुम्हें ऑपरेशन ही करना है तो it JBIM is definitely good, but there are also better colleges in JBIMS if you're talking only about operations. yeah. The I mentorship का I think think we course can का, take yeah, will close. This the mentorship last वाला question. Yeah, mentorship sure, वाला go ahead. one I'll just answer. So we can actually work around the course for mentorship. I mean, obviously it is interconnected. हर एक चीज़ एक पैकेज में इसलिए बनाया है ताकि हर स्टूडेंट को उसका हेल्प हो. हमारा मेंटर भी हमारे कोर्स के बारे में ही आपको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में ज़्यादा बता पाता है. बट since a lot of students are asking, we'll think about it. But I will definitely suggest you guys to go for the fast track and elite course because see, आप ROI अगर आप देखोगे, and actually yeah, I think it's a good time to announce this also. If you convert JBIMS after joining the top percentile course,
I think Aditya, we can do the fee refund wala announcement, right? Yeah, yeah. Yeah, so if you guys, take any of our course and get into JBIMS, we can refund you 100% of your fee. And that is what the confidence we have in our course. So please, at the end of the day, we are trying to help students. अगर आप convert कर ले Yeah, if you convert, Shrikant is lagging, but if you convert JBIMS, whatever you paid for the top percentile course, we can refund you. I think that's the announcement. Difference between fast track and elite. So fast track and elite में there is just one difference. In the fast track, you don't have the one-on-one mentorship, which I think Rocky you mentioned a few times. So that's the only difference between them. Solo batch में, yeah, there is no mentoring. It is for students to prepare on their own. Um, mentorship. So with mentorship is done through calls or video calls. So we tell the mentors to have those calls, but you are then connected on after the first call, you're then connected to the mentor on text on WhatsApp. So you can text them obviously, and then you can see how you want to have the next two sessions. That is mutually decided between you and the mentor, whatever suits you both. So it's been over an hour, guys. We'll close the session now. And thank you all for joining. Please like the video if you found it helpful. Um, we will be doing a lot more live, so please subscribe to the channel as well. And all the best for your journey.